मुझे 8 से 10 लाख का एक पैकेज चाहिए था. सो उस समय की बात है. बट टुडे लाइक having like making a video with you, and like we both are at a very good position, so it feels really good, Anubhav. So वेलकम टू उमंग अग्रवाल यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करने से पहले पूरी ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दो. Okay, so hello everyone. I am Anubhav, Anubhav Singhal, from Gorakhpur. Originally from Gorakhpur, but अभी मेरा college चल रहा है at JSS City, Noida. 7th semester complete हो गया है and final semester की तैयारी चल रही है. And apart from college stuff, you can find me either coding, building stuffs, or maybe cooking something for myself. ग्रेट टू नो दैट अनुभव. सो करेंटली अभी लाइफ में क्या चल रहा है? I'm guessing yeah तुम्हारे मतलब है कि like what I'm working on right now. या Okay, एग्जैक्टली. so अभी मेरी एक नई इंटर्न शुरू हुई है. आज पहला दिन है इनफैक्ट ओके. Coinswitch Kuber में. So it's a 6-month internship program, and yes, I'm excited for it. Web3 and finance दोनों मेरा एकदम personal favorite domain है. So yeah, I'm working at Coinswitch Kuber. और इसके पहले भी आई गेस बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी है तुमने, तो उसके बारे में थोड़ा. बहुत सारी नहीं, बट हाँ, आई हैड 2 internships prior to this. एक थी अटेंटिव एआई में. अटेंटिव इज दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप जो जियोग्राफिक स्पेशल डेटा पे वर्क करता है, एंड दे आर लाइक मार्केट लीडर इन देयर सेगमेंट. दे सो मेरी पहली इंटर्न वहीं पे थी, एंड आफ्टर अटेंटिव आई गॉट इनटू ब्राइट मनी. ब्राइट मनी इज यूएस बेस्ड स्टार्टअप जो अमेरिकन्स के क्रेडिट लोन्स पे वर्क करता है. दे प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बाय यूजिंग एआई, एंड या दे आर वर्किंग रियली गुड, एंड आई हैड लॉट ऑफ फन देयर. सो ग्रेट टू नो दैट अनुभव अगेन. एंड एक बार ये भी बताओ कि what was your major takeaways from these 3 experiences which you had? I don't know how to put this. I had a lot of perspective change over this course of 2 internships. मतलब not only technical wise, but मेरा social behavior or how I see the software development world, how I see the corporate life, and personality and all. सब में बहुत substantial difference आया है. And I can say it has been a very very good journey. And किसी mentor के अंदर रह के learn करना, and that learning curve which improves when you are with someone who are working as passionately as you're working. So yeah, it has been a fun experience and a lot of learning experience. Cool, Anubhav. So you interned at 2 company and now you are interning at a unicorn. So can you tell me like how you got till here from a tier 3 college? यार उमंग, you're also from a tier 3 college. I mean, Yeah, exactly. एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर belong करते हैं. So I'm pretty sure you know how things work in our tier 3 college segment. But to be honest, I never saw myself as कि मतलब I'm somewhere जो underprivileged जगह है, जैसे लोग tier 3 को view देते हैं. So things have been tough. जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, I had no clue कि करना क्या है. कॉलेज में बहुत सारे लोग सीपी के लिए बोलते थे और वो लोग खुद नहीं करते थे, तो लगता था वो लोग बोल ही क्यों रहे हैं. और सब लोग को वेब करना था. बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लोगों के पास इंटर्नशिप्स थी, भले वो पेड अनपेड व्हाटएवर, बट इंटर्नशिप थी. और हम बैठ के कोड शेप पे लॉन्ग चैलेंजेस कर रहे हैं जिसको रिज्यूमे में मेंशन करने का भी कोई मीनिंग नहीं है. सो इट वाज टफ, बट something's happened, जो लाइफ चेंज कर देती है. जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में मेरी एक कोड शेफ की वर्कशॉप हुई थी, where I went as a teaching assistant. I guess I was also there as a student. Yep, that's where we actually met for first time. Yeah. So I can say कि वो कोड शेफ की वर्कशॉप was kind of life changing for me in college.
because there I got to see how other colleges are operating, and जो लोग मेरे segment में work कर रहे हैं, by मेरे segment से मेरा मतलब है कि this DSA and CP वाला segment, तो उस पे बाकी colleges का क्या view है and बाकी coders का क्या view है who are actually doing exponentially good better than me. तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिले, एंड तुम तो थे ही, तुमको पता ही वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लोग आए थे जो मेरे साथ टीचिंग असिस्टेंट में थे. सो दैट चेंज्ड माय पर्सपेक्टिव, और उसके बाद मेरा डिसीजन क्लियर था कि यू नो व्हाट, अभी वेब नहीं करना है, अभी एंड्रॉइड नहीं करना है, लेट्स फोकस ऑन बेसिक डीएसए स्किल्स जो आई थिंक लॉन्ग टर्म में काम आएगी. सो टीयर 3 कॉलेज में ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता ये आइडिया, बट आई वाज वेरी मच फोकस कि अभी यही करना है. सो सेकेंड ईयर में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हुई, एंड सेकेंड ईयर के एंड में लॉकडाउन लग गया, ज़्यादा काम करने को था नहीं, एंड वहाँ से कंसिस्टेंसी भी आ गई थी. सो हम, मेरा एक क्लासमेट है आयुष, और तुम भी साथ में, हम सब लोग और रेगुलर कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देते रहे, एंड आई थिंक 8 to 10 months consistently per day प्रैक्टिस और कॉम्पिटिशन्स और रीसॉल्व, ये सब फॉलो करते करते हम लोग उस लेवल पे आ गए कि चीजें समझ में आने लगी थी. ऐसा मतलब होप आ गया था कि लाइक यू नो व्हाट, थिंग्स विल वर्क. यस. और फिर अप्लाई करना शुरू किए, वो भी एक अलग फेज था कि लाइक यू आर गेटिंग रिजेक्शंस एवरी डे. आई एम अप्लाइंग एट 10 or 15 कंपनीज, आई एम ड्रॉपिंग देम कोल्ड मेल. और एक टीयर 3 कॉलेज का भी इशू है कि अच्छी कंपनीज हमारे कॉलेज में आती नहीं है. So you have to find companies on LinkedIn. You have to scrape their emails, scrape emails of HR founders and senior roles members. So it was a very rigorous process, जो I guess 4 महीने 5 महीने तक तो चला है. And I've applied in almost every company. और पहले लगता था कि रेफरल मिल जाए तो काम हो जाएगा. बाद में पता चला I was actually referred to almost every other company you can think of, चाहे वो फैंग लेवल, चाहे वो स्टार्टअप लेवल, but I got rejections from all of them. I can relate for to like this. 4 months. Yep, I guess every tier 3 college student can relate to this story कि 3-4 महीने तक लगातार रिजेक्शन ही रिजेक्शन. कई बार ऐसा होता था कि एक दिन में 3-4 कंपनी के रिजेक्शन आ रहे हैं, और वो दिन ऐसा लगता था कि am I cursed or what? But you know what, लोग थे कुछ के साथ तो में रिप्लाईज यार. भी नहीं आते थे कंपनीज के. अरे बहुत, अधिकतर के रिप्लाईज नहीं आते, उनको 3-4 महीने बाद मान लेना पड़ता था कि ओके दे हैव रिजेक्टेड. But eventually things worked out. मतलब it's like you have to keep playing the game. So 3-4 महीने के rejections की phase के बाद I got into attentive, and later on I got into bright, and I think that was very significant improvement to my resume of working under 2 good startups. And अब तो यार ये status है कि like if I start applying anywhere, then I usually get till the final round, or in fact I get offers. Cool, Anubhav. So that's really interesting, and I know because I have been there. So why don't you give a detailed overview of like how you applied to these companies for any one of them? Let's say Coinswitch Kuber. यार उमंग, मेरा process तो like I follow a general strategy for applying anywhere. Like get in touch with people inside the company. In fact, I've written a thread on Twitter about this. I'll share it to you. So Yeah, sure. what happens is I start connecting with some engineers who are working in the company, and I get details like what's your tech stack and what do you expect from an intern or fresher, or if you're hiring or not. Yeah. And in parallel to this, I also drop an email to HR and the founder, because I mean, since they're a startup, तो क्या कहते हैं, उतनी ज़्यादा hierarchy रहती नहीं. If you put a mail to founder or CTO, then they will pass it to HR. I mean, that's what I think. Yeah. So that was the whole process of applying. Ki I'm constantly getting in touch with the engineers who are actually working there, and in parallel, I'm getting in touch with the HR and the founders. And if things work out, then I usually get replies from HR for at least getting into the recruitment process. और अगर हमको recruitment process में नहीं भी मिलता है ना, then I get really good feedback that why am I not getting into the process and what is expected of me which I'm not having. So eventually it works good for me. Okay, so the same you did for other companies as well.
I have done same for almost every other company that I've applied. And about recruitment process, then it was pretty much similar to every other companies. बस कुछ चीज़ें डिफरेंस होती है. फॉर एग्जांपल इन CoinSwitch मेरा पहला कोडिंग राउंड हुआ था ऑनलाइन ऑन some platform, I don't recall. I think HackerRank. मेरा एक कोडिंग राउंड हुआ था which had decent question, like I would say 3 question थे from graph, from greedy, and one was complicated, constructive, I can say, कि mix of 2 3 algorithms. Okay. मेरे तीनों हुए भी नहीं थे. But I did 2 of them and one of them was partial, so it was fair and good. उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ which was around 1 hour long, जिसमें मेरी overall experience was discussed, like my projects and what all experiences I had in previous companies. So this was the whole process. And सिमिलरली इन ब्राइट मनी में कुछ नंबर ऑफ इंटरव्यूज ज़्यादा हुए थे. लाइक पहले कोडिंग राउंड हुआ था एंड देन आई हैड कपल ऑफ DSA राउंड्स, देन आई हैड developer round where my prior experience in internship experience was discussed. So yeah, pretty much similar. Great, great. And I'm guessing तुम्हारे भी recruitment process भी almost similar ही रहे होंगे. You also have a decent experience in several companies. यस यस एग्जैक्टली अनुभव. एंड आई थिंक ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, बाकी लोगों को ये नहीं पता कि वी कैन ऑल्सो ड्रॉप ईमेल्स टू द एचआर एंड टू द फाउंडर्स एज वेल, अगर हम एक स्टार्टअप फोकस कर रहे हैं. तो मैंने भी बहुत कंपनीज में ऐसे सेम स्ट्रेटेजी अपनाई है. एंड यूजुअली मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज से रिप्लाईज आते हैं एटलीस्ट एक, मतलब Yeah, in नहीं तो fact, फीडबैक आता है. in fact, very good point I can add here. Usually college students dependent होते हैं openings पे कि ये vacancy एग्जैक्टली है कि नहीं, opening वो है कि खोज नहीं. रहे होते हैं करियर But पेज पे जाके. हाँ, but if you drop an email in a startup, यार उसमें 200-400 लोग work कर रहे होते हैं. In most of the cases even less than 200. तो अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी होगी ना तो वो लोग तुम्हारे लिए स्पेस क्रिएट जरूर. कर देंगे. एग्जैक्टली. I guess same thing happened for me in last 2 internships. They didn't had opening on their pages and all. In fact, first attentive में तो मेरे साथ ये हुआ था कि they had opening for senior software engineer, and I just dropped them in mail कि like if in future you are looking for interns, then I am available. Or somehow it worked for me. So guys, if you want to know more about what cold emailing is and all, so please drop the comments and we'll try to make a video on that as well. Yep. Okay, so let's come to the most famous dilemma that the students have कि CP करनी है या नहीं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हम कॉलेज में करें या नहीं करें. Okay, so I think you're talking specifically about CP, not for DSA. No, right? no, both CP and DSA. Okay, because हम भी बहुत टाइम तक हमको ऐसा लगता था कि CP and DSA both are same thing. And हाँ, I see कि स्टार्टिंग में मेरे यही लगता है. अरे अधिकतर जूनियर्स अभी भी मतलब आई सी कि वो लोग CP और DSA को एक ही मान के चलते हैं कि CP तैयारी कर रहे हैं, DSA कर रहे हैं. So basically these two are different things. You know that pretty well. कि Yeah, yeah. DSA is all about the data structures and algorithms that are going to be used while you program. While you make any piece of code, you are going to use data structures and algorithms. And competitive programming is a sport based on DSA. So these two are different things. So I would say DSA is very important. Like if you want to get into tech field, irrespective of web or ML or whatever you want to be, if you want to be in tech field, DSA is really, really important. I've seen the difference in developers who are weak in DSA and who are really good in DSA. I've actually seen that kind of difference. So DSA is very important. CP is something I would say key optional है. Like you don't have to fight for 5-star on CodeChef, 6-star on CodeChef, or expert on code process. That's your choice. अगर if you इंटरेस्ट are आ रहा है enjoying तो the करो. DSA part, हाँ, if you are enjoying the DSA part, then do CP, because I've seen कि जिनका IQ अच्छा होता है, they have not done CP, but still they are able to perform equal to me or sometimes better than me. So CP is just the sport part. You can have fun, you can enjoy the game, but DSA is, I would say, most important part in software development. ग्रेट ग्रेट. सो दैट्स वेरी इंसाइटफुल अनुभव, एंड आई गेस बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस पार्ट में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लाइक क्या रिसोर्सेस तुमने फॉलो किए लाइक फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, या
in general, what resources did you follow? Yeah, I used hell lot of resources, but I will point down some of the most loved one I can say. So for competitive, you know that pretty well. हमको कोड Yeah. फोर्सेस बहुत पसंद था. I think I can say वो मेरा पहला प्यार था. I used to give 5 to 6 hours per day on code forces for like 10 months. I've given so code forces is my first choice for CP, and lead code is my second choice. Lead code is more of like क्या कहते हैं कॉम्बिनेशन है कि उसमें सीपी और डीएस से दोनों प्रैक्टिस हो जाता है. Cool, Anubhav. So I would like to add some points here. Like when I started, like second year में, third year में, like you said, जब बहुत हम वो स्ट्रगल कर रहे थे, कोड फोर्सेस के कंटेस्ट दे रहे थे, उस समय वी हैव ए थॉट लाइक आगे आगे क्या होगा लाइफ में, कभी इंटर्नशिप लगेगी कि नहीं. एंड सीनियर्स को देख रहे होते थे कि किसी का अमेजोन में हो रहा है, तो बहुत अंदर से लगता था कि मतलब हमें चाहिए था ना उस समय. मेरा टारगेट एक्चुअली मैं बताऊंगा कि मुझे 8 से 10 लाख का एक पैकेज चाहिए था. सो उस समय की बात है. बट टुडे लाइक having like making a video with you, and like we both are at a very good position, so it feels really good, Anubhav. So and इसका I अनुभव can बहुत I अच्छा can हुआ. understand. ओके अनुभव, सो मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो रही है. सो एक लाइन में कुछ फाइनल पीस ऑफ एडवाइस हमारे ऑडियंस को. एक लाइन बहुत छोटी. ओके ओके ठीक है, एक सेंटेंस में ही सही. यार एडवाइस आई डोंट नो इफ आई कैन गिव एनी स्पेशल एडवाइस. आई थिंक सब कुछ सुना ही होगा कि लाइक डोंट क्विट, कीप प्लेइंग द गेम एंड ऑल. बट वन थिंग दैट आई कैन से कि पर्सनली हम देखते हैं जो कोई करता है, इट्स लाइक गेट आउट ऑफ योर सर्कल. अगर तुम एक कॉलेज में हो देन डोंट गेट शील्डेड इन दैट कॉलेज कि हमको कॉलेज में बैठे रहना है. Get out of your circle. Stay active on internet. आज तो internet we can almost talk to anyone in this world. So see what everyone is doing. मतलब यही मत करो कि don't follow the rat race. Try everything. मतलब I can say that I have tried designing, I have tried ML, I have tried Android, I have tried web, I have tried a lot of stuff apart from technical career. I'm not going to discuss that here. So I've tried a lot of things, and I've failed a lot of times in all of that. So by the end, I software development choose किया because I know that this is my arena. I can stand here and fight all day. So that is just what I feel कि मतलब I've seen बहुत सारे लोग जो फर्स्ट ईयर से ही एक चीज शुरू कर दी and they are doing it till now, and they think they are really good in that. Maybe you are good in that, but you haven't tried anything else. Yeah, exactly. So that's one thing maybe I can put, but again ये भी सुनी सुनाई बातें ही है. There's nothing special here. ओके अनुभव, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस. वैसे तो मैंने तुमसे पूछा नहीं था, ठीक सीधे बताया था कि लेट्स डू दिस. थैंक यू सो मच. Thanks guys. Thanks for watching. And for more such related content, please do like, share and subscribe my YouTube channel.